हर महीने मैं इंडिया के बहुत सारे कॉलेजेस में जाता हूँ और बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट से इंटरेक्ट भी करता हूँ एंड फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस मुझे रियलाइज हुआ है कि देयर आर सर्टेन स्किल्स दैट सम college students have that just make their market value 10x of the other people, and that is what I want to talk about in this video. Hi everyone, I'm Ishan Sharma and in this one we'll be talking about 5 underrated skills. 5 ऐसी skills जो अगर आप सीख लोगे that will just make you unstoppable. Your demand in the market will 10x because of these 5 underrated skills. ये बहुत difficult नहीं है, आप इसको कभी भी सीख सकते हो. This should not take more than 1 or 2 weeks of your time, but these are going to be extremely valuable for your skill set. So make sure that you hit the like button and let's talk about these underrated skills. Number 1, I think most people when they want to get opportunities they don't know the art of cold emailing. आपको सच से बताऊं तो every single opportunity जो मुझको मिली है आज तक, be it getting podcast guests like Ritesh Agarwal, be it getting Ankur Warikoo, be it getting any billionaire out there. I recently did a podcast with Nikhil Kamath and Nitin Kamath of Zerodha. All of this was possible because I was great at sending cold emails, right? And I think ये छोटी सी स्किल है जो बहुत सारे लोगों को नहीं आती और लोग बस बैठ के सोचते रहते हैं कि भाई इनको कैसे कॉन्टैक्ट करूं या फिर इससे कैसे बात करूं या फिर मैं इस ब्रांड के साथ कैसे काम कर सकता हूं. It's all about writing a catchy cold email that gets you the reply. अब मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी ऑन कोल्ड ईमेल, बट जल्दी से 2 मिनट में आपको समझाता हूँ कि what are the important steps to take. First of all, आपका एक सब्जेक्ट बहुत ही अपीलिंग सा होना चाहिए so that people can click and then read the whole email. It should not be clickbaity. मुझको कई बार लोग लिखते हैं कि यार I want to suicide or something. वो नहीं करना है, राइट? उससे क्या होगा, पूरा भरोसा चला जाएगा आपके पास से, राइट? There are some amazing effective subject lines that you can start out with, जैसे आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर. नेक्स्ट स्टेप शुड बी टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. जल्दी से 2 लाइनें बताओ कि आप कौन हो, कहां से हो, करते क्या हो, बस खत्म. नेक्स्ट स्टेप शुड बी अ सिंपल पैराग्राफ इन विच यू आर टॉकिंग अबाउट हाउ डू यू रिलेट विद दैट पर्सन, राइट? जैसे कि कई बार मैं लिखता हूँ कि हे आई रेड दैट बुक ऑफ योर्स इन विच यू टॉक अबाउट XYZ, और हे आई वॉच दैट वीडियो ऑफ योर्स जहाँ पे आपने ये इसके बारे में बात करी, और मैंने आपसे मिला था मैं एक इवेंट में और मैंने आपसे ये वाली बात करी थी. व्हेन यू डू दैट यू एस्टैब्लिश कॉन्टेक्स्ट कि भाई तुम हो कौन एग्जैक्टली, राइट? एंड वंस दैट कॉन्टेक्स्ट इज एस्टैब्लिश्ड द नेक्स्ट स्टेप इज फॉर यू टू आस्क, राइट? तो ये लास्ट पैराग्राफ होगा, इसमें आप बोलोगे कि हे आई नो यू आर बिजी बट हियर इज अ क्वेश्चन दैट आई वांटेड यू टू आंसर, और हे आई नो यू आर बिजी बट आई वुड लव टू हैव यू ऑन माय पॉडकास्ट समटाइम, और हे आई नो दैट यू do a lot of these podcasts but I want this one to be unique, here are my questions. So ये तो अपनी email की body हो गई, इसको send कर दो, but the next important skill is to follow up on the email, right? So after about 48 hours you can just send a follow up email saying that hey, just wanted to check if you got a chance to have a look at this email, let me know if you have any whatever, right? जो भी आपको पूछना है आप उनसे पूछ सकते हो. एंड यू शुड कंटिन्यूअसली डू दैट फॉर मे बी 2 दिन के बाद करो, फिर 3 दिन के बाद करो, फिर 5 दिन के बाद करो, एंड यू डू दिस फॉर as many times as you want. बहुत सारे फाउंडर्स हैं जो बताते हैं कि हमने 20 बार फॉलो अप किया तब जाके हमको ये स्टार्टअप के लिए फंडिंग मिली एंड ऑल. मुझको पर्सनली लगता है कि ईमेल करना इज हाफ द बैटल वन, बट जो फॉलो अप करने वाला पार्ट होता है ना, दैट इज अ रियल गेम दैट यू शुड ऑल्सो मास्टर. सो दैट इज कोल्ड ईमेलिंग. बहुत ही सिंपल सी स्किल है, जैसे मैंने आपको बता दिया अभी 2 मिनट के अंदर. एंड यू कैन गो आउट देयर, ईमेल द पीपल दैट यू वांट टू गेट इन टच विद. मेरी वीडियो देख लो विच इज पर्टिकुलरली ऑन कोल्ड ईमेल इफ यू वांट अ डिटेल्ड गाइड about it. तो चलिए बात करते हैं about the second underrated skill that you should learn, and this one has to be जुगाड़ करना. अब इसका कोई particular definition नहीं है, but the idea here is whenever you encounter a challenge, a hardship, a difficulty, some problem in your life, राइट? ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो बैठ के बस सोचने लग जाते हैं कि क्या करना है, ये नहीं हो रहा, राइट? एंड दे स्टार्ट बिचिंग अबाउट इट. व्हाट यू नीड हाउएवर इज टू स्टार्ट फिगरिंग out, right? So you go on Google, you type ये नहीं हो रहा, how to fix it, you talk to your seniors, you talk to your parents, you talk to your teachers, you read some books, and the idea here is that you go figure it out, right? जुगाड़ लगाओ, जो भी करो, but just get the thing done. बहुत सारे लोगों के पास नहीं होती है ये skill, and I think because of that they are just not able to move ahead in life. Like ठीक है, if you want to start making a podcast, आपके पास एक माइक नहीं है, आप क्या चीज़ यूज़ करके अच्छे से ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, सोचो उसके बारे में, राइट? आप कैसे नॉइज़ को रिड्यूस कर सकते हो, उसके बारे में ब्लॉग्स में पढ़ो, उसके बारे में आर्टिकल्स में पढ़ो, ईमेल्स में पढ़ो, एंड गेट दिस थिंग डन,
राइट? अगर आप ये एक स्किल सीख लोगे ना, दिस will literally make you so much more valuable in the job market because you are here for the solutions, right? Like people are often, just worried. People are always irritated with the problems. They're always talking about it कि अच्छा ये सही नहीं है, ये सही नहीं है. But the people who are really valued are the ones who are there to give you the solutions, right? कि अच्छा ठीक है ये हो गया but इसका solution ऐसे हो सकता है, right? So you need to be with that person or you need to become that person. तो ये तो हो गई skill number 2. अब इसको सीखोगे कैसे, right? This needs to be more of a mindset shift than anything else, right? Like this mindset shift of thinking about solutions and not problems and then approaching it with a builder's mindset कि चलो कोई बात नहीं, I'll break this problem down, I'll approach it one by one, I'll try to solve everything. चलिए अब बात करते हैं about the third underrated skill, and this is because of the huge AI revolution that is in front of us, and this one has to be प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, राइट? अब ये क्या होता है, ये एक नई टर्म आप सुन रहे होगे, बट जैसा आप देख सकते हो वी हैव चैट जीपीटी, वी हैव डाली, वी ऑल्सो हैव मिड जर्नी. तो ये सारे एआई चैटबॉट्स हैं जिनमें आपको कुछ टेक्स्ट उनको भेजना होता है, तो इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट. जो भी आप उसको भेजते हो एआई को, दैट इज द प्रॉम्प्ट, एंड द बेटर योर प्रॉम्प्ट द बेटर विल बी द आउटपुट, राइट? अगर आप मिड जर्नी में जाओगे, वहां पे सर्च करोगे अ स्लीपिंग डॉग, वो आपको एक बहुत ही सिंपल सी फोटो दे देगा ऑफ अ स्लीपिंग डॉग, राइट? बट अगर आप उस पर लिखोगे अ स्लीपिंग डॉग इन अ डिज्नी स्टाइल वर्ल्ड, 4K लाइटिंग, सिनेमैटिक, राइट? यू कैन सेट द एस्पेक्ट रेशियो. व्हेन यू राइट इन डेप्थ अबाउट द prompt, you will get extraordinary results from AI, right? So it's all about the prompt, right? And if you can master the prompt, you can master the output as well. And इसीलिए the most important skill right now is prompt engineering. जो लोग जानते हैं how to write the best prompt are the people who will be valued a lot in the future, right? Because AI can automate everything, AI can handle everything that you want, but just if you send the right prompt to it. ठीक है? So again, ये skill कैसे सीख सकते हो आप? You will need to read a lot about it. यहाँ पे कोई particular course नहीं है on prompt engineering so far, but you just have to read about it on articles. You need to read about it. You need to watch some videos on YouTube about it. You need to experiment a lot of stuff yourself. ChatGPT खोलो, वहाँ पे खूब सारे आप prompts डालो and see how the computer reacts to it, how the AI reacts to it, and that is how you will get better with prompt engineering. ये कुछ एक हफ्ते की चीज नहीं है. This is going to take you months. It will reward you much more than the effort that you've put in this whole AI revolution. Prompt engineers is going to be the new job of this new decade, and you need to get in the first part of it itself. तो ये तो हो गई third underrated skill. The fourth one needs to be public speaking. यार मैं बहुत सारे seniors से मिलता था मेरे कॉलेज में, and they used to come and talk in front of us juniors, and उनको बात ही करनी नहीं आती थी, राइट? मतलब वो लोग बैठे हुए हैं एंड कुछ कुछ बोल रहे हैं, वो स्टैमर कर रहे हैं, कभी चुप चुप होके बोल रहे हैं, कुछ आधी बात बोल रहे हैं, आधी बात अंदर मुंह में ही रह गई उनकी, एंड दे डोंट नो हाउ टू स्पीक इफेक्टिवली, right? And so if you can learn how to communicate yourself, how to speak your heart out in front of a group of people, you are going to have the highest leadership capability, right? If you can lead a bunch of people and you can tell them to do something, that will make you more powerful than anything else, right? So this skill of public speaking is the most important skill in the soft skills, I think. Most people are either afraid of it or they are just not putting in enough effort to learn about how to engage an audience, right? और मेरे पिछले एक साल का यही goal था that I go to colleges, I meet people and I start speaking in front of them. अभी मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, right? This video might get 10, 30, 40, 50,000 views, but if I can have 10,000 people in front of me, real audience, how can I effectively talk to them in that case, right? I want to learn that. And that is what I did, and I had an exceptional experience talking to all of the college students in all of these colleges, and I think all of you should try, at least try to get in front of audiences and start speaking yourself. You are never too late to start. I know आप लोग सोच रहे हो कि भाई जब स्कूल था तो वहाँ पे there were a lot of seminars, there were बहुत सारे ऐसे events होते हैं ना जिनमें you need to get in front of people, you need to sing some poem, you need to put out some speech or something like that. But today this is a very big opportunity. Get in front of people,
participate in as many competitions as you can and start speaking in front of people and see how they react, and you start putting in the effort and this skill will reward you more than anything else out there. तो अब बात करते हैं about the last underrated skill that a college student should have, and ये जो skill है ना मैंने अभी recently सीखी है, and this is called building your own personal brand. अब मैं ये नहीं कह रहा कि सारे कॉलेज स्टूडेंट्स को इन्फ्लुएंसर बनना चाहिए, नो दैट इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग, बट मैं बस इतना कह रहा हूँ कि if someone searches about you on Twitter or on LinkedIn कि भाई ईशान शर्मा, then they should see your work over there, right? आपकी प्रोफाइल मिलनी चाहिए, आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज्ड होनी चाहिए, आपकी प्रोफाइल अपडेटेड होनी चाहिए, एंड आपके जो पोस्ट होंगे, जो आपके ट्वीट होंगे, जो आपके थ्रेड्स होंगे, that should reflect your expertise. Right? Not to become an influencer, but just to showcase the work and the learnings that you've had in a particular industry. Let's just say that you are a designer. Make a profile about design and start speaking about design, right? Write a thread every week. Anyways, you waste so much time on YouTube. You might as well put it into something productive, right? Go out there and start sharing your learnings with people on social. Right? When you do that, first of all, that expands your opportunities, right? When more people will discover your content, they are much likely to give you work as well and work together with you, right? And if you can learn this skill can open up a lot of different horizons for you. You can make money through obviously social media promotion. You can make money through working with multiple clients. You can make money by consulting. You can make money by selling your digital products to your own audience or to businesses, right? These could be checklists, these could be calendars, these could be assets, whatever it is that you are proficient in, you can start selling it to them using Gumroad. So these were the 5 underrated skills that I wish I knew when I was 18 and that you can master and expand your opportunities by 10x. Go out there, learn these, share this video with a friend of yours. You can tag me on social and follow me there at Ishan Sharma 7390. I will see you all in the next video. Bye-bye.